गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्लाइनेक्स 2021। तो ये हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका 9th एडिशन जो है वो इस बार कंडक्ट किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। तो इसको दो फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा हार्बर फेज जो कि विशाखापट्टनम में होगा। दूसरा होगा सी फेज जो कि बे ऑफ बंगाल में होगा। तो ऑफ कोर्स ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो हार्बर फेज जो होगा, जो कि विशाखापट्टनम में होगा, उसमें प्रोफेशनल, कल्चरल, स्पोर्टिंग और सोशल एक्सचेंजेस होंगे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बीच में या नेवल फोर्सेस के बीच में। और जो सी फेज होगा उसमें हम जो है आपकी नेवल ड्रिल्स होती हैं, जो जैसे सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग एक्सरसाइजेस, एविएशन ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सी फेज में कंडक्ट की जाएंगी। इससे हम आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो श्रीलंका और इंडिया जो है उनकी नेवल फोर्सेस जो है वो आपस में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकती हैं। तो इसीलिए ये मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2005 में शुरू की गई थी और ये 9th एडिशन है इस बार। ठीक है, तो बीच में ऑफ कोर्स कुछ मिस हुई है, इसीलिए ये 9th एडिशन बन रहा है। ये तो 2020 में भी कंडक्ट हुई थी और उसके बाद जो है अब ये कंडक्ट की जा रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। तो आपका जो वी डेम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, उन्होंने डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकाली है और उसमें उन्होंने 4 डेमोक्रेसी रजीम टाइप्स को जो है वो एक तरह से करेक्टराइज किया है। तो पहला है लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो अब इसी इंडेक्स में ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड वाइड जो एक एवरेज ग्लोबल सिटीज़न है, वो 2021 में उसमें जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो 1989 के लेवल्स पर पहुंच चुकी है। मतलब कि साल 2021 में ऐसी इतनी डेमोक्रेसी का लेवल पहुंच चुका है जितना 1989 में था। अब उन्होंने बोला है कि मोर देन ट्वाइस कंट्रीज, मतलब पहले 15 थी, अब वो बढ़कर 32 हो गई हैं। 32 ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑटोक्रेसी की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक तरह से डेमोक्रेसी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को उन्होंने बोला है कि इंडिया थर्ड कैटेगरी में है, जो कि है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और 93rd रैंक दिया है इंडिया को 179 कंट्रीज में से। इंडिया जो है वो वन ऑफ द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजर्स इन द वर्ल्ड बना है। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर पोलराइजेशन की जा रही है इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शंस के थ्रू जो है वो यहाँ पर ऑटोक्रेसी लाई जा रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियाटम। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पाया गया है कि वो ओरल ट्यूमर्स में इसकी प्रेजेंस देखी गई है। तो आपका कोलोरेक्टल कैंसर कैंसर जो आपका रेक्टम में, कॉलन में कैंसर होता है, उसमें भी जो है ये बैक्टीरिया जो है वो पेशेंट की जो है कीमोथेरेपी में एक तरह से बाधा बनकर आता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसीज़ है वो कोलोरेक्टल कैंसर में वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए देखा गया है कि ओरल ट्यूमर्स में भी जो है ये फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियाटियम जो है ये जो है वो प्रेजेंस इसकी देखी गई है, और ये बढ़ता जाता है और इससे ओरल कैंसर जो है वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है आपके इंडियन और कॉकेशियन ओरल कैंसर पेशेंट्स में खासकर ये बैक्टीरिया देखा गया है। कॉकेशिया कौन सा रीजन है आपका? आर्मेनिया, जॉर्जिया और जो अजरबैजान वाला रीजन है, ये कॉकेशियन रीजन है। तो वहाँ के पेशेंट्स में और यहाँ इंडिया के पेशेंट्स में देखा गया है कि ये बैक्टीरिया ओरल कैंसर में पाया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। तो यूएन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को एसेंशियल मानता है, ताकि एटलीस्ट एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में टेम्प्ररी पॉज दिया जा सके। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते क्या हैं? तो ये डीमिलिटराइज्ड जोन्स होते हैं। जब बोथ पार्ट जो जितनी भी दो भी पार्टीज़ हैं जो भी लड़ रही हैं, वो कुछ टाइम के लिए लड़ाई को रोक देती हैं, या फिर एक ऐसा जोन बना देती हैं जहाँ से फूड और मेडिकल एड जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके, खासकर सिविलियंस तक। तो अब होता क्या है कि कई बार ऐसी सिटीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत सिविलियंस रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, बमबारी हो रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि लोगों को फूड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मेडिकल मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी। तो इसलिए बहुत लंबे टाइम तक वो सिविलियन स्ट्रेस वहाँ पर हो सकता है, सिविलियंस की ज़्यादा डेथ हो सकती है। तो ऐसी एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन को, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफे को रोकने के लिए दोनों साइड्स जो हैं, खासकर यूनाइटेड नेशंस मीडिएट कराता है, और यूनाइटेड नेशंस कह देता है कि आप करो तब तक कुछ टाइम के लिए, ताकि लोगों तक एटलीस्ट फूड और मेडिकल एड तो पहुंचाई जा सके, है ना। इसलिए अब इसको कौन सेटअप करता है? तो जनरली तो यूनाइटेड नेशंस सेटअप करवाता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में बात करवा के। और कई बार जैसे इस बार देखा गया, ये रशिया और यूक्रेन ने आपस में भी डिसाइड कर लिया है मीटिंग्स करके कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे। तो उससे क्या होता है कि लोगों तक ये
एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो पहुंच पाती हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स का यूज़ करते हुए जो है कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो वेपन्स की स्मगलिंग कर सकती है, फ्यूल जो है वो पहुंचा सकती है, ताकि वो अपने मिलिट्री व्हीकल्स को या मिलिट्री जो है वो इक्विपमेंट को जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत कर सके, और जो है उससे अटैक ज़्यादा बुरी तरह से कर सके। ठीक है। और ये इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इन्हीं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के थ्रू ही यूएन के ऑब्जर्वर्स, एनजीओज, जर्नलिस्ट जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में पहुंच सकते हैं जहां पर सिविलियंस स्ट्रेस में है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समर्थ स्कीम फॉर वुमेन। तो आपको पता है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज के ओकेजन पर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई जो है उन्होंने समर्थ स्कीम निकाली है। इस स्कीम के अंदर जो है विमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि 20% सीट्स जो हैं फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो फ्री वाले हैं उनमें विमेन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। एमएसएमई जो बिजनेस डेलीगेशंस जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को भी देखने, तो उसमें भी 20% जो सीट्स हैं वह विमेन ओन्ड एमएसएमईज़ के लिए रखी जाएंगी। 20% डिस्काउंट दिया जाएगा एनुअल प्रोसेसिंग फ़ी के लिए, जो कि आपका नेशनल, आपका जो एनएसआईसी है, जो उनका जो आपका जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए, और उनकी कमर्शियल स्कीम्स के जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी होती है, उसमें 20% डिस्काउंट उनको मिलेगा। फिर स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो होगी आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो विमेन ओन्ड जो एमएसएमईज़ हैं उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो एनएसआईसी आपकी एक मीना रत्ना गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक एमएसएमई ने 1955 में बनाया था। तो ये एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आपको पता है कि आज के दिन जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आज के साल का हमारा थीम, इस बार का साल का हमारा थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। तो थोड़ी सी हम इवेंट्स देखते हैं क्यों मनाते हैं हम ये इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो 1908 में क्या हुआ कि 15,000 वुमेन जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने डिमांड करा कि हमें शॉर्टर वर्किंग आवर्स चाहिए, बेटर पे चाहिए, और वोटिंग राइट्स भी चाहिए। ठीक है। फिर उससे अगले साल 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया फरवरी 28 को। और फिर तब से डिसाइड किया गया कि लास्ट संडे जो होगा फरवरी का वो वुमेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 1913 तक ऐसा ही हुआ। लेकिन 1910 में क्या हुआ था बीच में कि क्लारा जेटकिन जो थी, उन्होंने आइडिया रखा इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने का, और 9 मार्च 1911 को जो है ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल वुमेंस डे को मनाया गया। ठीक है। लेकिन एक बहुत ही दुखद एक आपका इंसिडेंट हुआ उसी साल मार्च में, मार्च 25 को एक ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में फायर लगी, और उसमें बहुत सारी विमेन और गर्ल्स जो है उनकी डेथ हो गई। तब उस समय ये एक तरह से सामने आया कि कितना ज़रूरी है कि वर्किंग कंडीशंस विमेन की इम्प्रूव करने का। ठीक है। तो उसी टाइम के आसपास जो है, जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने लगी, तो रशिया ने फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो 23 फरवरी को सेलिब्रेट किया, जो कि लास्ट संडे जो है फरवरी का था। लेकिन क्योंकि रशिया जो है वो उस टाइम पर जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रहा था, तो वो फरवरी 23 जो है वो एक्चुअली में मार्च 8 था। तो इसीलिए तब से जो है वो ये डिसाइड किया गया कि जो ग्लोबल डेट है इंटरनेशनल वुमेंस डे की, वो मार्च 8 रहेगी। फिर यूनाइटेड नेशंस जो थे उन्होंने 1975 में वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे को सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया, और 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया कि यूनाइटेड नेशंस डे ये जो है मार्च 8 जो है वो विमेंस राइट और इंटरनेशनल पीस का डे मनाया जाएगा। 1996 में पहली बार फर्स्ट एनुअल थीम दिया गया इस डे को, और जो थीम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी। तो अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने कोर्ट्स प्रोजेक्ट की फेज़ 2 के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर बताया कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी जो है वो जुडिशरी में आने चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि कोर्ट्स क्या प्रोजेक्ट है। तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इन इंडियन जुडिशरी 2005 की जो रिपोर्ट थी कमेटी की, उसके बेसिस पर ये कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, ताकि जो है
एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं उनको उनमें जो है वो बेसिक आईसीटी जो है या बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उसको बढ़ाया जा सके। तो ये 2015 में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको जो है वो फंड करता है, मॉनिटर भी करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो है वो एक तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो अब जो है जुडिशरी में एआई का क्या रोल है, तो अब आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट 1,81,000 वर्चुअल हियरिंग्स कंडक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। और हम जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है बैक एंड प्रोसेसेस को ऑलमोस्ट ऑटोमेट कर ही दिया है, ठीक है। और जो है धीरे धीरे कुछ ऐसी जो है सिस्टम्स भी लाए जा रहे हैं, जैसे सुवास। सुवास में क्या होता है कि जो जजमेंट्स दी हैं कोर्ट ने उनको जो है ट्रांसलेट किया जाता है दूसरी भाषाओं में। और दूसरा सिस्टम है सुपैस, ठीक है। सुपैस में क्या होता है कि लीगल ब्रीफ को ड्राफ्ट किया जा सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ऐसे दो सिस्टम्स को ऑलरेडी हम एआई को यूज़ कर चुके हैं। तो अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए एक कमेटी भी बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, जो कि एआई टेक्नोलॉजी को कैसे जुडिशरी में और ज़्यादा हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसके ऊपर जो है वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Slinex 2021. So recently, the ninth edition of India-Sri Lanka bilateral maritime exercise, that is Slinex, is being conducted at Visakhapatnam. So this exercise will be conducted in two phases. The first one will be, of course, the harbor phase, which will be conducted at Visakhapatnam, and the second one will be sea phase, which will be conducted at Bay of Bengal. So of course this exercise will enhance interoperability between the two forces, improve mutual understanding and exchange best practices with each other. So under the harbor phase of this exercise, professional, cultural, sporting and social exchanges will occur between the two forces. And during the sea phase exercises, other naval operations like the special forces operations, cross deck flying, advanced tactical maneuvers, anti-air weapon firing exercise, all these military exercises or naval exercises will be conducted between the two forces. So this series of bilateral maritime exercise started in 2005 to enhance interoperability between Indian and Sri Lankan naval forces. Okay. So now let's see the next topic, which is Democracy Report 2022. So VDEM Institute at the Sweden's University of Gothenburg has released this annual report on democracy, and this report is titled Democracy Report 2022, Autocratization, Changing Nature. Okay, so this report typically characterizes four regime types of democracies in their liberal democracy democratic index. So the first one, of course, is liberal democracy, which is the perfect form of democracy, as per, of course, this report. And the second one is electoral democracy, which is basically just you are conducting elections and the democracy is on just papers. The third one is electoral autocracy. So you are using democracy to pursue your autocratic ambitions. And the third one is, and the last one is closed autocracy, which is not a democracy. Okay, so as per this report, an average global citizen in the year 2021 is enjoying the democracy which existed at the 1989 levels. Okay, so this is basically saying that the democracy is suffering loss and the democracy is declining over a period of time. Okay, so almost more than two times more than twice as many countries are undergoing autocratization, as if we can compare it with the last few years. Okay, so about India, this report is saying that India is in the third category, that is the electoral autocracy category, and it ranks 93rd on this liberal democratic index. So India is also one of the top 10 autocratizers in the world, and because of polarization, this toxic polarization, India is witnessing steep divisions between societies. And using the electoral tools, the politicians here are pursuing their autocratic ambitions. Okay, so all these assumptions are made by this report. Of course, it is true or not, that is a separate thing. Okay, so now let us see the next topic, which is Fusobacterium nucleatum. Okay, so researchers at ACTREC Tata Memorial Center have found out that there is a
bacteria, Fusobacterium nucleatum, in the oral tumors of uh, uh, certain healthy individuals. And this bacteria is known to play a vital role in colorectal cancer because it affects the spread of the disease and the patient's response to chemotherapy. Okay, so this has also been found in oral cancer patients, and it is of course found in much higher incidence among the Indian patients. And this oral cancer patients which were found to be positive for fusobacterium, they were found negative for human papillomavirus infection. We have already discussed about the HPV also. Okay, so currently we do not know the impact of this fusobacterium on the tumors or these infections. So the research will be undertaken by this ACTREC and Tata Memorial Center, and they will find out how this bacterium is basically impacting the disease. Okay, so now let us see the next topic, which is humanitarian corridors. So you know that Russia and Ukraine have negotiated a humanitarian corridor during their ongoing conflict in the region. So generally United Nations consider a humanitarian corridor if there is a temporary pause of armed conflict. So basically these humanitarian corridors are demilitarized zones where both sides agree that they will cease to conduct military operations for a particular point of time in such areas, so that food and medical aid and essential supplies can be restored for the civilians who are stuck in areas where the conflict is happening. Okay, so generally these corridors are necessary because cities which are under siege and the population under these in these cities are cut off from basic food supplies, electricity and water. So that's why to prevent any humanitarian catastrophe, these humanitarian corridors are negotiated between the parties so that they can provide much needed relief to the civilian population. So generally these humanitarian corridors are negotiated by the United Nations, but they of course sometimes, like in Russia and Ukraine situation, they are also set up bilaterally. Okay, so but there are also threats to these corridors can also be threats to peace, because sometimes any of the two parties can utilize these humanitarian corridors as uh, an avenue to smuggle weapons and rather uh, supply fuel to their military equipment, so that the offensive can be enlarged in such areas. Okay, so of course there is also a good thing that UN observers, NGOs and journalists can also utilize these humanitarian corridors to access those areas which are contested and the war crimes are possibly being committed in those areas. Okay, so now let's see the next topic, which is Samarth scheme for women. So on the occasion of International Women's Day, Union Minister of MSME has launched this special entrepreneurship promotion drive for women, that is Samarth. So under this drive, 20% seats will be reserved for women, and about for the, in of course the free skill development programs of the government. 20% of MSME business delegations which are sent to domestic and international exhibitions will be dedicated to women owned MSMEs. 20% discount will be given to annual processing fee on NSIC's commercial schemes to women. Special drive for registration of women owned MSMEs will also occur during their registration of their MSMEs, that is their Udyam registration. So the NSIC is Mini Ratna company. Was established by MSME Ministry in 1955. So it is basically the government agency which implements several of the schemes of MSME Ministry. Okay. So now let us see the next topic, which is International Women's Day. So you know that on March 8th, we celebrate the International Women's Day every year. So the theme for this year is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. So why do we celebrate it? Because like let's say the series of events, like in 1908, 15,000 women marched in through New York City because they were demanding shorter working hours, better pay, and voting rights for themselves. Next year, the Socialist Party of America observed the first National Women's Day on
28th February in 1909, and women continued to celebrate it on the last Sunday of February until 1913. So simultaneously in 1910, the second international conference of working women was held in Copenhagen, where Clara Zetkin, who was a social democrat of Germany, she tabled the idea of International Women's Day, and in 1911 itself, International Women's Day was honored for the first time in Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. But in that particular month, in that same year, just few weeks later, on 25th March, uh, a very sad event happened where in the Triangle Shirtwaist Factory, a fire took away the lives of almost 140 women and girls, and it drew attention or global attention to the working conditions and labor legislations in that country. And simultaneously in Russia, the women observed the first International Women's Day on 23rd February, that is the last Sunday of February. While of course in Russia it was 23rd February because they were following the Julian calendar, but according to the Gregorian calendar it was March 8th. So since then, the global date for International Women's Day became the 8th of March. Okay, so in 1975, the United Nations also celebrated the International Women's Day for the first time, and in 1977, United Nations Day for Women's Rights and International Peace was observed, and they started. This General Assembly adopted the resolution for that. Okay, so in 1996, the UN announced the first annual theme for this day, that is the celebrating the past and planning for the future. So since then, we have been celebrating the International Women's Day with a theme at each year. Okay, so now let us see the next topic, which is AI in judiciary. So Union Law Minister has said that there is an increased scope of artificial intelligence and machine learning. So he made these statements where uh, during the launch or the implementation of so basically he made this statement during a parliamentary meeting, and he said that while the government was implementing the e-courts project, they realized that machine learning and artificial intelligence has immense scope in our judiciary. So they must these two things must be implemented in the judiciary as soon as possible too. Okay, so what is the e-courts project? So we have to see that also. So e-courts is basically a project in which we are enabling our district level courts with digitization. We are enabling their infrastructure so that they can be ICT enabled. So this project was launched on the basis of National Policy and Action Plan for Implementation of ICT in Indian Judiciary. It was a committee, and it submitted a report, and Supreme Court of India was asked to transform the Indian judiciary by ICT enablement of courts. Okay, so it's a pan India project. It was launched in 2015, and it is monitored and funded by the Department of Justice. And under this, the district courts across the country are being ICT enabled. Okay, so like there is an immense scope of AI in judiciary. We have seen that during lockdown, almost 181,000 virtual hearings were conducted by the Supreme Court of India, and most of the back end processes have been conducted by the Supreme Court using machine learning and artificial intelligence tools. So there are two famous machine learning based applications also, Suvas and Supace. Both of them are basically language learning applications. One is used to translate judgments, and the second one is used to draft a legal brief. So realizing the importance of AI in judicial domain, the Supreme Court has also constituted an artificial intelligence committee, which will of course submit the report soon as to how and in what areas the AI technology can be utilized in the Indian judiciary. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.